Hello, and once again, welcome to the second day of our 10-day program for the Class 11 Foundation Chemistry. I am SS Tripathy, welcoming once again to my foundation program. We are joined by several participants in the Zoom. Assis, Ayush, Harshita, Piyush, Rudra, Samidha, Sejal, Nihar, and many more will join. And yesterday, we had a rapid fire discussion on writing formula of ionic compounds containing monoatomic ions and polyatomic ions. And also, we learned how to find the oxidation number in covalent compounds, covalent ions, using the simple rules for determining oxidation number or oxidation state. And we have to now take up some important and typical cases where the actual oxidation number can only be determined by the knowledge of the structure, the covalent structure of the molecular ion. Otherwise, you will be getting an average value. So let's start without delay. Let me share my screen. And so welcome those who are watching directly from the YouTube live streaming. Welcome. So, do you have anything to ask me at this moment before I jump into my rapid fire round? Do you have anything to ask me? Please. Excuse me, sir. Yes. Sir, I have asked it out to yesterday. Ionic. Yes. Okay. What is the benefit of net ionic equation? Okay. I'll tell you. I remember that. Any other question? No. Okay. Let me ask you a few questions. Draw the formula of, write the formula of T into Namaskar, Anil sir. Welcome. T into say chlorate. You write the formula T into chlorate and then find the oxidation number of teen chlorine. Obviously, teen will be +2 because I have told you teen2. That's not a big deal. Yesterday's prize winning question was little easy. So 4 of you sent me the answer. I have recorded that. I'll tell you later. Yes. Raise your hands after writing the formula and then finding the oxidation state of teen and chlorine in the compound T2 chlorate, ATE.
Ayush. Ayush is not happy with ionic equations. He is firmly against it, perhaps. He's saying if molecular equation is serving our purpose, then what is the meaning of writing the net ionic equation? What is the fun lies there? So that I will tell you. Yes, no one except Rudra. It should be very, very fast. Rudra, tell me, what is the formula? I use. Now, Rudra, tell me. What is the formula? Rudra. Sir, SnClO3 whole 2. Precisely. SN2 means SN2 plus. Chlorate is ClO3, chlorate, bromate, iodate is ClO3, BrO3, IO3, and it is 1 minus. So on crossover. Sir, chlorine plus 5. No, mu ako kore. SN ClO3 whole 2. This is the formula of tin 2 chlorate. Then you need to find out the oxidation state of tin. Is very simple because it is a monoatomic ion. Maybe rule number 5 will tell us it is +2. There is no need to calculate. Monoatomic ion, because its valency is 2 plus, so its oxidation is also +2. So to find the oxidation number of chlorine, you have two choices to make. One is a difficult choice, time-consuming choice. The other one is an easy choice. Let me first tell you what most of you will be trying or wanting to do at this stage of your learning. So you take the entire molecule, since it is a neutral molecule, say tin is +2, we know, and say there are 2 chlorine atoms, so 2x plus 3 2s are 6 oxygen, so 6 into -2 is 0. So that gives you 2x is how much? It is 10. So x is coming +5. So the chlorine is +5. But the easier way to make it an ion, because whether it is a neutral tin 2 chlorate or a chlorate ion or lead chlorate or sodium chlorate, any chlorate or simply chlorate ion. So I would have chosen to separate the ion from the molecule, chlorate ion. So I would have used the formula for ion, the last rule for finding ON for an ion. So x minus 6 is equal to -1 because it is a charged ion. So x is +5. Raise your hands who have answered this 2 correctly. +5 for chlorine and +2 for tin. So many of you have done, but those who have not practiced a little bit, well, they might be. I told you that even if you find something hard, unable to cope with the progress, you just watch. Just like you are watching remotely in a YouTube direct live streaming. Just watch. Nothing, no harm is going to happen. If you listen and do something, at least that will be your gain. And those who are a little serious, they will benefit max. Now, my another question will be, I told you, I'll tell you some cases where this is what we call magnetic oxide. Or some people call it ferroso-ferric oxide. When we say ferroso-ferric, you already know that there are 2 types of iron, and one is +2, the other one is +3, ferroso-ferric.
So if you find by X method, presuming that all iron atoms are identical type, without looking to what is the real structure within, then you will find 3x minus 8 is equal to 0, x is equal to plus 8 by 3. But it cannot be a fraction. अगर आपको फ्रैक्शन मिलता है तो दाल में जरूर कुछ काला है, तो इसलिए आपको प्रीवियस जानकारी चाहिए. Fe3O4 is nothing, is a mixed oxide, FeO and Fe2O3. It is a mixed oxide of ferrous oxide and ferric oxide. So there is +2 iron, 1 + 2 iron, and 2 + 3 iron. This is ferric, 2 + 3 iron. And if you take the average +2, and there are 2 + 3, because such iron atoms having +3 state is 2 number of +3 atoms. So divided by 3 iron atoms, the average is coming +8 by 3, but none has an oxidation number of 8 by 3. One is +2, the other one is plus. Other two, not one, other two have +3. Same is the case with Pb3O4, as we funnily called red lead. It looks perfectly red. Trilade tetroxide, trilade tetroxide. And if you find same thing will happen X method, you will get -8 by 3. But if you look to the real composition, it is 2 PbO and 1 PbO2. Lead has two states, as we used to call +2 and +4, plumbous and plumbic. Now we say lead-2 and lead-4. So there are 2 lead +2 and 1 +4. So here +2 2 times, +4 1 time, and shared by 3 lead atoms. So the average oxidation number is +8 by 3. Similarly, if you have bleaching powder, if you write the bleaching powder formula in a very dubious manner, CaOCl2, if you are getting a formula like this is the empirical formula of bleaching powder. Calcium, it's something very fishy about this formula. This formula, I will not accept it. But if somebody gives you this formula, then you will definitely find the average oxidation number of chlorine, which is coming 0. Calcium is a group 2 element, +2, its valency is always fixed, and oxygen is -2, unless it is peroxide, and 2x is equal to 0. So x is coming 0. But if you know the actual composition of bleaching powder, you will find that it is having 2 negative ions. Bleaching powder has 2 negative ion, 1 positive ion, and 2 negative ions. One is hypochlorite and one is chloride, D. The other one is T, hypochlorite. The other one is chloride. So since it is a monoatomic ion, its oxidation number is -1. It is a monoatomic ion. But this is a polyatomic ion. You have to find by X method, -2 for oxygen plus X, and sum will be equal to -1. Since it is a charged ion, the sum is -1. So X is coming +1. So in hypochlorite, it is +1. Just put it over the head of each atom, and this is -1. So the average is 0 by 2 is 0. So this is what we call paradox. Means it is actually something else, but appearing from the formula that you sometimes get as something different. So there are many such cases. For example, the other day, that girl was asking CrO5, chromium pentoxide.
So if you just apply your x knowledge of x minus 10 is equal to 0, x is equal to plus 10. But this is namumkin. Namumkin, क्योंकि chromium is also in group 6. Erstwhile group 6b and oxygen, selenium, sulfur group 6a, but now it is really group 6. And oxygen has been sorted to the right portion, group 16. But both chromium and oxygen, they have 6 electrons in their, outermost orbitals. So they can, at the most, use 6 electrons in bonding and can lose maybe really or hypothetically. So plus 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि इसका ग्रुप नंबर इज ऑल्सो 6 लाइक ऑक्सीजन फैमिली. तो कहां से हमको प्लस 10 मिला? इट शुड बी कैनॉट एक्सीड plus 6 because the group number is 6, means it has 6 electrons in the valence orbitals. So आमे जदि structure को देखिबा, then you will be finding that there are 2 peroxy linkages like this and 1 normal oxide. So once again, chromium will lose 6 of its own electrons so that it will be plus 6. Cannot. So the trick is, if you are getting more than its group number or its maximum permissible valence or oxidation state, then you drag it from that higher value, which is a fictitious value, which is the wrong value, back to the group number or the maximum oxidation state. So that is why, if you are given that actually the structure is this: chromium diperoxide oxide, chromium diperoxide oxide. So actually the bleaching powder is called calcium chlorido hypochlorite. To make sure that 2 types of negative ions are present, we can say calcium chlorido hypochlorite. Calcium chlorido hypochlorite. Similarly here, chromium diperoxide oxide, oxide diperoxide. So one normal oxide is -2 and there are 2 peroxide. For one O2 2 minus, there are 2 O2 2 minus, so total is -4. So obviously chromium will be having +6 state. Sijal, you got it? Yes, sir. There are many such cases which will depend on your knowledge of bond structure, which is not required at this stage, but you should know. You must be suspicious about the happening in the X method. You must be critical once you are getting a question and there are multiple atoms of a particular element. Then jarur, for example, the laughing gas. If you smell this gas, you will get a very typical honey experience, which the English people named it as a laughing gas. I have never experienced any laughter while smelling that gas. But yes, when we remember it is a laughing gas and we are not laughing, then the gas is dishonored. So we give a fake laughter. So we fake many things out of which we laugh. But yes, the smell will be something which is pleasant. But it will arouse laughter when I have never experienced. Truly. So N2O, if you find by X method, tell me, raise your hands, what will be the oxidation state of nitrogen? Here you will have a suspicion. There are 2 nitrogen. ये 2 nitrogen एक ही type का
क्या है और दो किस्म का है, दोनों varieties are different, that you do not know. You know, maybe after 1 month or 2 months when you study in your coaching places or school or anywhere, you will know that no, there are two types of nitrogen. So what is, raise your hands who have found by X method. X method में कितना आता है? समिधा कितना आता है X method में? +1. Precisely, it comes +1 because it is 2x minus 2. 2x minus 2 is equal to 0, so x is equal to +1. But if I draw the structure of nitrous oxide, you will be, you know, this bond is a different type of bond. This, for common student, we put a arrow mark indicating that it is a dative bond. So let me not put you under more and more confusion. Let me simplify to a class 9 representation. This arrow mark represents that the 2 electrons are contributed by nitrogen alone. Nitrogen is the donor of this covalent bond. Oxygen is the acceptor. So this kind of covalent bond is called a dative bond or a coordinate bond. Covalent, but it's separate name, dative bond or a coordinate covalent bond. But these 3 triple bond is a normal triple bond, sharing 3 pairs, one from each nitrogen atom in each pair. Now tell me, this nitrogen and this nitrogen will have how much charge? I mean, oxidation state, oxidation number. You apply your intelligence. The average should be +1. You know, what you got by X method is the average. So the 2 different oxidation numbers that you will propose should give the average +1. Yes, any hand raised so far? Ayush Koilo? Sir, 0 and +2. Precisely. Karan ethi hochi tu to je mu to siye. I told you if the atoms are same, that no give, no take. So this nitrogen will have a 0 oxidation state. And a vibhajano pai, this breaking pai, a nitrogen kishi charge pailani. But these 2 electrons which belong to nitrogen will be transferred to oxygen, because all bond pairs will be transferred to a single atom, which is more electronegative. So it will lose 2 electrons. This is a dative bond, a different type of covalent bond. So here it is +2. So +2, +0, and 2 atoms. So the average is coming +1, but there is no nitrogen having a real oxidation state of +1. One is 0, the other one is +2. So in this way, you will, I am not going to discuss this more, because you will find in my PowerPoint notes several such things where you will find by X method something, but in reality it is something else that needs your. Similarly, if it is C3O2, this is called carbon suboxide. Like carbon dioxide is carbon suboxide. Suboxide, C3O2. And now, if I ask by X method, then you will say something, you know, something very funny. What is the X method? Yes? X method रे केते बार अरे सेमती मने मने कर दे परिबनी सीजल Sir, 4/3. अच्छा ये कोड गला जॉइन करथिला हमर बेनाजिर आर यू देयर नो बेनाजिर हैज लॉस्ट कनेक्टिविटी कोई बात नहीं
x केते बाहरला केते बाहरला yes Nihar थाओ तमर माइक्रोफोन -4/3 नहीं हो कि नहीं निहार आयुष +4/3 +4/3 कारण এটা 3x - 4 is equal to 0 so x is equal to +4/3 but if I draw the structure you can tell so assign the oxidation number of each carbon. Cecil is answering. Your Cecil. Stanos. Sir, +2, 0 +2. কি आंसर दो तो Sir, Cecil. Cecil. এটা 0 এটা 0 এটা কেতে Sir, 0. এইটা এইটা কেতে No, sir, সেটা +2. আর বীজ মজিটা পাল্টাটা 0. মজিটা 0 আর এপরটা +2. প্রিসাইজলি କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତୁଦ ଯିଏ ମୁତୁଛି ଏଇଟା ତୁଦ ଯିଏ ମୁସୁଥିବେ ସେ ମଝି କାର୍ବନଟା 0 କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ବନର ଏପଟେ ସିନା ତୁଦ ଯିଏ ମୁତୁଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ତ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦିଟା ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦିଟା ହରେଇବ so +2 ଏପଟେ ସେଇ ଦଶା same thing will happen on the other side so the terminal carbons will have +2 and the middle carbon will be 0 so altogether if you find the average it will be +4/3. So don't be scared, you will be given some advanced information. Don't be scared. As much as you understand, try to understand as much as possible. Similarly, there is normal sulfide. This is normal sulfide is S2-, and is a polysulfide is SX2-. So there is a SSSS chain. Supposing this is pentasulfide S5-2-. All of them 2-. And the other sulfurs, they will be attached in a linear manner. Like a train having different compartments, one attached with the other. So the terminal sulfur will be having charge. The internal sulfur will be connected with each other. So obviously, if you find by X method, you will find -2/5. 5x is equal to -2. So X is equal to -2/5. But actually, there is no such sulfur. The internal sulfur all will have 0. And this will be -1, this will be -1. So only the terminal sulfur atoms will have oxidation number -1, -1. And the 3 internal sulfur atoms will have 0. So that it is coming -2/5 as an average. These are called polysulfide ions. So it's not easy at this stage to distinguish from the formula whether it is a polysulfide or, for example, I say is ferrous sulfide. And I say I write FeS2. You do not know. You can say maybe iron here enjoys the oxidation number of +4 because these two sulfide are normal sulfide, -2, -2. So both together will be -4. So this will be +4. Then you'll get a jhatka. You will think that I have never heard iron having +4 state. Well, it can have, but here it doesn't. It can have +4, +6,
there are so many oxidation states of iron. You will know later, sooner or later. But here it is not +4. It is +2. And therefore, this is sulfide is disulfide under the category of polysulfide. So iron, this is a mineral called iron pyrite, is a mineral, iron pyrite, also very funnily called fool's gold, Bokanka Sunna. It looks like gold, but it's not gold. Iron pyrite, where iron enjoys an oxidation state of only +2, not +4. And the sulfide is not an ordinary sulfide or normal sulfide. It is a disulfide under the polysulfide category. So with this, if you don't have any question to ask other than we will go to the ionic equation very shortly. Then you will yourself tell what advantage is there in handling ionic equations over the molecular equation. The huge gigantic molecular equation can be trimmed to a very good looking small ionic equation. Then let's talk about reaction. When we come to the reaction, I can well guess that majority of you might not have got time to practice. Had you got the time to spend for this program, then I would have smelt it. The smelling has not come to me. Possibly you have taken this program as a not very important program, because final destination is not the uranium, somewhere else. So since it is happening, let me sit, let me listen. But that doesn't give the instructor enough encouragement to carry on with all passion. I definitely will need little better involvement. I'm sorry to tell, because many are also watching from outside. It's not for them, but for particularly those from uranium, other English medium guys or other guys who have joined, they do not know the importance of our programs. At least you know. Anubhav, Ayush, and Rudra, even they failed miserably to motivate this time to the instructor. Did I not deserve a thank you from yesterday's class when it was over? Did I not deserve a mere thank you in our WhatsApp? You guys, these other invitees, they do not know, perhaps they are little alienated from that. But you guys are intimate, have intimately interacted with me. So that gives me little displeasure to have a passionate program that I had planned originally. And you, most of you, all of you, refrain from writing anything in the chat box. When I am saying good morning to you, and you never ever think that I might be wanting some reciprocation, that when the instructor is saying good morning and I'm benefiting from this program, and I will not reciprocate anything. It's really little unexpected. So I hope and trust, at least, even if you don't, I told you, even if you don't prepare well, at least you have
the courtesy, the etiquette, the manners to say, had you been in your real offline class to a teacher, when you return from the class, you say a good night or have a good day, depending on the time. Or some people coming from the vernacular medium, they continue the habit of falling flat on the feet. So many things you do. At least say bye. That also I found complete silence, for which I am really agonized. I'm not happy. I'm sharing with my all my erstwhile uranium guys. I don't expect much from the other guys who have been invited, and I am deliberately slowing down for them, not for you, for them. Otherwise, my speed would have been much, maybe 2 times, 3 times. Anyway, had I not told you, perhaps I would have done my job. I would not have done my job well. I would have done injustice. It's not that it is not satiating my ego, the teacher's ego or something else, but you should have the manners to at least say thank you to your parents, to your teacher. That is missing, completely silent. Rudra was the first person to say something, write something. Answer देखेलो, ठीक अच्छे. तुम्हें कॉरिक आंसर टा दे देलो first. Rudra was the first guy. तापरे आउट के पठेला ताको सेकंड कहली कि अनुभव ना के सेकंड रे पठेलो के ताको कहली सेकंड में आयुष yeah. So please don't mind if I'm little blunt in my approach, because don't think that I am extending this program to you because I have to do. I have no other choice than not to do. It's not like that. I am in need of some passionate students who will interact with me. If such students are not available now, they find this unimportant, very, very low priority in their all, appearing so many important assignments and all things. The priorities are at the bottom. In that case, there is no point in extending this program, right? Okay. It's not for those who are watching online. We'll be doing that. I'm very happy that many are watching from this program outside the class. So never mind, this is not for you. I will continue this program for at least you. Now, let's take up a reaction. Don't feel sad. Supposing we go for, there are 2 types of reactions. One we call redox reactions, where oxidation as well as reduction happens. The other one is non-redox. There is no third reaction. That is the bottom line. Redox reaction or non-redox are, as we call it, metathesis. We have given a separate name. So let us first know what is oxidation. In the modern language, oxidation is the loss of electron, or it is increase in oxidation number. If you are handling with covalent species, then you have a new definition: increase in oxidation number, loss of electron. Both are synonymous. And reduction, whenever there is a loss, there is a gain. Somebody else will gain. So this is gain of electron. Or decrease in oxidation number. Now, if I write a small equation, which you know from your class 10, 9, that this a
stronger metal, an active metal which is lying above hydrogen in the metal activity series will displace hydrogen from acid, dilute acid. So you get ZnCl2 plus H2. It's not ionic equation, this is molecular equation. So here what happens? Zinc is neutral. Here zinc is 2 plus. So since it is an ionic compound, you can say zinc has undergone a change in its charge. It was having 0 charge and now it is having +2, means it has lost 2 electron. Is dita gato, as I used to funnily say, gato hella. Loss of electron jogu hella. So loss of electron hella. Or now we know the oxidation number. 0 thila oxidation number, neutral, I mean, on combined state re, and combined state re taro oxidation number hela +2. So increase in oxidation number kahiba jaha, loss of electron kahiba seya. So this process is oxidation. Just write O. O signifies oxidation. Swagatika, welcome. Anyone can join. And whenever some species has lost electron, some other species will gain it. Jone dela 100 टंका गोटे पॉकेट रु गली गला ये गोटे नहीं जीवो कोन मु पाई गेले मु नहीं जीवि से नहीं जीवो तेनु नबो किए ना इट हाइड्रोजन एटी +1 थिला बिकॉज़ हाइड्रोजन आयन होची +1 इट इज 0 तू तो जे मु तो से कोवेलेंट बॉन्ड थिले भी 0 दीटा कर 0 सो +1 रु 0 यार गोटे गात थिला गात पूर्ण हे गला एटी न्यूट्रल हे गला दीटा जाकर गात नाही सो गेन एटी हला कोन ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हला सब बेले गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम देखि परियोनी कारण गोटे कोवेलेंट स्पीसीज जदी हेतिबो तो ऑक्सीडेशन नंबर तो देखिबाटा इजी हबो सो एठी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हला +1 थिला 0 को आसिला सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और decrease in oxidation number is called a reduction. The one which is oxidized zinc is called reducing agent or reductant or reducer. आगु कह जाउथला reducing agent एबे कहउछि reductant आ जोटा निजे reduced हे गला सेटा हला oxidant और OA oxidizing agent oxidant अवश्य क्लोरीन किसी है क्लोरीन टा स्पेक्टाटर एठी आयुष कह स्पेक्टाटर देख से क्लोराइड टा मुझे देवी आ गोटे आउ टिके परे देवी एठी क्लोराइड टा स्पेक्टाटर कारण सेपटे क्लोरीन रो कोनोसी नाही क्लोरीन कंटेनिंग स्पीसीज राइट साइड रे नाही से क्लोराइड आयन आकु जदी मु करिवि आकु जदी मु आयनिक इक्वेशन करिवि बेले बेले आयुष रो कथा को बुझियो पड़ियो करिवि ताहले यही आसीबो क्लोराइड आयन तो काटी देकरी Zn2 plus H2G इटा सॉलिड टा metals are solids excepting mercury which is also not soluble in water so this is the equation so अनुभव सॉरी आयुष कहूची आमे एमिति काई न लेखि कि सब एमिति काई लेखिबा well remember a ionic equation is only valid for aqueous solution reaction जोटा पानी रे सॉल्यूशन टा होची तो गोटे सॉलिड पड़ी गला ठीक अछि किंतु पानी एसिड अछि जिंक क्लोराइड पानी रे रहिबो हाइड्रोजन उड़ी जीवो तो एई भलिया केस रे हमें आयनिक इक्वेशन लिखि परिबा बट इफ ऑल आर गैसियस that there cannot be any ionic counterpart there will be only molecular equation I'll tell you some example so it a reductant it a oxidant आ गोटे एग्जांपल दउची MnO2 plus HCl now you find out what has happened to manganese and what has happened to chlorine to save time मु कहि दउची manganese कारण मो संगे 10टा खंडे रिएक्शन करले तुम जानि परिबो तमरो चोरो को चिन्हिबार जो 8टा धीरे धीरे सिखि जीवो जानि परिबो जे मैंगनीज रो चेंज हेछि क्लोरीन रो चेंज हेछि कारण क्लोरीन हियर इन द राइट साइड इट इज अनकंबाइंड स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर 0
लेफ्ट साइड रे कंबाइंड अच्छे माने जीरो नुहे तो यू हैव टू फाइंड आउट वन culprit is chlorine, the other one is manganese. बाहर करो x मेथड रे अलगा जगह रे एवं बाहर करी पेंसिल रे ता मुंडो ऊपर लेख मैंगनीज केते थिला केते को आसी रुद्र इज पॉइंट अनुभव आयुष ओके मैंगनीज एठी धरो x गोटे बाहर करबा x -4 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू +4 सो मैंगनीज एठी अछि +4 and in the right side it is a monoatomic species its balance is +2 and he is +2 so it has been reduced from +4 to +2 this process is reduction so how it has happened how it has undergone reduction by gaining of electron. Who was given the electron? Who is the donor? Donor is chlorine. Chlorine obviously here in the uncombined state here is in -1 is a monoatomic chloride ion. So -1 to 0 it was having a thonto and additional charge was there and that thonto was cut here. Both chlorine had zero marker chlorine. So there is a increase in oxidation number -1 to 0 border. The increase in oxidation number tala oxidation or loss of electron. So oxidation joti reduction seiti and sei reaction rate. Empty hai parivani oxidation will happen, reduction will not happen, or the vice versa. This is not possible. If it is happening somewhere, definitely something is wrong. दाल में जरूर कुछ काला है. So a reaction को जदि आयुष तमे ताकू जदि करिबो ionic equation it is an aqueous reaction किंतु manganese dioxide टा गोटे insoluble substance it is an insoluble substance so this is a very pitch dark powder पानी रे soluble नुहे एटा hydrochloric acid टा ac एटा all chloride salts are ac excepting silver mercurous and lead ac and this is a gas this is L आको किछि करि परिबने G and L तो बर्तन करो देखिबा करी कोन हला आमे कोन करिबा MnO2 लिखिबा एटा को भांगिबा H+ + Cl- एटा को भांगिबा Mn2 + Cl- 2 लिखिबानी कारण बैलेंसिंग करूने प्लस Cl2 गैस प्लस वाटर L सो आमे हठात करी काटी पकेबा Cl- Cl- एठी झटका हमर आसीबो तुम जदि प्रैक्टिस करितिबो most likely करino because you are not taking many of you are not taking this program seriously I am convinced now so MnO2 एमती लिखि दबो will give you Mn2 plus Cl2 plus water किंतु परे तुमको झटका लगिबे क्लोरीन आसला कोडू तो जोटा तमे काटी थिलो सेटा को तमे लिखि देलो so that logically you can know that which substances have undergone change MnO2 would have insoluble substance ion produce करि नथिला से +4 state रू +2 को आसिला chloride ion टा -1 रू 0 को गला so this is the change सेमती आउ गोटे रिएक्शन जहार आयनिक इक्वेशन हेई परिबो नाही फॉर एग्जांपल you heat it in presence of a catalyst platinum it will give you NO plus water catalyst न दे की हीट कले नाइट्रोजन गैस बारिबो catalyst platinum catalyst नले NO बारिबो जेनो काई की कोन ए सब जिंस परे जानि मु खाली तुमको इक्वेशन लिखेबी लिखिला पर तुम जानि परिबो एटा रिडॉक्स की नॉन रिडॉक्स तापर बैलेंसिंग टेक्निक सिखेबी so that you will be familiar confident with equations जोटा आसले भी तुम ताको हैंडल कर दो कौन ऑक्सीडेशन नंबर कौन चेंज हला गोटे गोटे तुम जानि पार तो गोटे चोर धरा पड़ी गला ऑक्सीजन इज 1 बिकॉज इट इज अनकंबाइंड स्टेट रो अछि एठी कंबाइंड स्टेट रो अछि एठी हो के एठी हो जोठी हो सो एठी 0 अछि एठी निश्चित होबारे -2 अछि जणा पड़ी गला तो आ गोटे निश्चय नाइट्रोजन कन हाइड्रोजन सब बेले +1 एठी भी +1
तो नाइट्रोजन जना पड़ुछि एटी हाइड्रोजन सांगरे सांग एटी ऑक्सीजन सांगरे सांग एमती पुराना डेफिनेशन देखिले यू नो लॉस ऑफ हाइड्रोजन गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन तो सही अनुसार पकई देले नाइट्रोजन किंतु एटी ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करिया पड़िबो की कहि परिबो अमोनिया रे नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर केते यस हर्षिता कहला कृष्ण प्रिया यस Sir, -3. प्रिसाइज एंड एटी केते एटी नाइट्रोजन यस सीजल केते Sir, +2. +2 प्रिसाइजली कारण x मेथड रे बाहर करिवो एठी x +3 इज इक्वल टू 0 कारण हाइड्रोजन सब बेले +3 हमें लिखिवा कथा H3n किंतु गलती से मिस्टेक करूचे हमें NH3 लिखुचे सेति पई तुम भाबुच मने मने एटा +3 बोली नो हाइड्रोजन एटा मेटल हाइड्राइड नो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल सो नाइट्रोजन एटी -3 रे अछि किंतु एटी x -2 इज इक्वल टू 0 हले x इज इक्वल टू +2 सो -3 रु +2 को आसिला एंड ऑक्सीजन 0 रु -2 गला सो जोटा निजे ऑक्सीडाइज हे गला तो इटा हला रिड्यूसिंग एजेंट बा रिडक्टेंट एंड ए प्रोसेस टा हला ऑक्सीडेशन एंड जे निजे रिड्यूस हे गला सेटा होची ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओए एंड ए प्रोसेस टा हला रिडक्शन सो दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन now kahi ki bartman increasingly I will face difficulty while I will take you to the art of balancing equations because many of you have not practiced how to find oxidation number in a flask immediately gote molecule dihala ion dihala par kariba x method re ho ये जो exceptions गुड़ा का बहुत कम rare जोड़ा को मैं discussion कर दी थी paradoxical cases well supposing I'll say this is very interesting reaction which we call you know comproportionation reaction I will categorize later when in the reactant there are two types of nitrogen one nitrogen is from the cation the positive ion the other nitrogen is from the negative ion it has two different oxidation states but they are going to the same oxidation state in the product so such reactions are opposite to disproportionation I will give you example of every type and I'll ask you to find the oxidation number and here where is oxidation happening and where is reduction and since the oxidation and reduction that is happening from the same compound so we can't assign the agent we can't say yes if we ionize it then we say ammonium ion is what and nitrite ion is what you can say that you have to find out the oxidation number of nitrogen 2 times taking them separately as positive ion NH4 plus and negative ion NO2 minus then only you can't go by the 2x method you can't go by 2x method so हाँ अनुभव कहलो ए नाइट्रोजन रो केते सर सर फर्स्ट नाइट्रोजन रहा -3 आउ द्वितीय सर +3 हबो प्रिसाइजली
कहीं ना जदि आम एटा स्प्लिट करदेबा इनटू 2 आयंस NH4 प्लस एंड NO2 माइनस हाँ आ गोटे कथा मैं भूली गली द प्राइमरी इज फॉर्मूला राइटिंग प्राइमरी प्रैक्टिस करिए इवन इफ यू आर क्लास 11 स्टूडेंट इफ यू डोंट प्रैक्टिस राइटिंग फॉर्मूला करेक्टली देन एवरीथिंग will be going in a downward manner. If you write formula incorrectly, then your oxidation number will be incorrect. Everything else will be incorrect. The first and foremost is to draw right correct formula. So aku x method karo x plus 4 is equal to plus 1. So x is equal to minus 3. Aku karo x minus 4 is equal to minus 1. So x is equal to plus 3. So it minus 3 plus 3. Kintu ubhaya 0 को जाइछे एटा minus 3 ru 0 oxidation number बढ़िला. So this is oxidation. एटा plus 3 ru 0 oxidation number कमिला. एटा reduction. So गोटिए compound रे ये oxidant atom अछि reductant atom अछि. एई प्रकार रो atom element ता same. एई प्रकार reaction को कहंती comproportionation. Two different oxidation state will landing at the common oxidation state in the product. Now, the opposite of comproportionation is disproportionation. For example, chlorine reacts with hot and concentrated sodium hydroxide to give you NaClO3 plus NaCl plus water. सेही क्लोरीन 0 रु समथिंग को जाइछि सेही क्लोरीन 0 रु आ गुटे समथिंग को जाई सम अदर थिंग को जाइछि बाहर कलो और रुद्र कहूची जे काली क्लास शेष को मु थैंक यू जणै थिली फॉर डिसअपॉइंटिंग आई विल करेक्ट इट रो किछि कथा नै अच्छा पेरेंट्स माने टीचर माने ताकर काम होची तुमको रेक्टिफाई करबा जदि से नकला खाली पाठ पढ़े देकी चली गला जदि किछि तम भितरे किछि वैल्यूज पॉसिबली से न चाहिला ताहल तो वी आर डूइंग वी आर नॉट डूइंग जस्टिस to the teaching profession. अच्छा 0 रु केते गला केते केते पिला हाथ टेकी सारलेनी समिधा एटी केते क्लोरीन रु Sir, it will be 5 plus 5 ना प्लस 5 plus 5. वेरी गुड सो एटा हला ऑक्सीडेशन सेही क्लोरीन रु एटा केते एटा मोनो एटॉमिक क्लोरीन केते समिधा Sir, that one will be minus 1. प्रिसाइजली -1 एटा गोटे मोनो एटॉमिक आयन एक्स मेथड दरकार नै एक्स मेथड रे कले लोक भाबी एटा बोकीटा बोकाटा एटा मोनो एटॉमिक क्लोराइड आयन टा प्रा सो एटा रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर सो ए प्रकार रिएक्शन को कहंती डिस्प्रोपोर्शनेशन एटा सब रिडक्स मु किछि नॉन रिडक्स अपन तो देइनी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आउ केतटा का अछि ऑटो रिडक्स दीटा डिफरेंट एलिमेंट फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट किंबा अन्य कोनोसी नाइट्रेट को अदर देन अल्कली मेटल नाइट्रेट्स अदर देन लिथियम नाइट्रेट फॉरगेट अबाउट इट सो दो छोड़ा को परे पड़िबा सो नाइट्रेट को यूजुअली हिट करले कोन हबो गोटे रेडिश ब्राउन गैस बाहरिबो NO2 ता संगे गोटे बाय वन गेट वन फ्री आ गोटे गैस बाहरिबो आउ एटा सॉलिड PbO इज ए सॉलिड एटा सॉलिड रिएक्शन हो आर किछि आयनिक इक्वेशन नाही एटा सब सॉलिड फेज रिएक्शन को पानी मोटे एठी नाही एठी तक आयन करि परिबो ही नाही तो लिमिटेशन जानि गलो आजी जे आयनिक इक्वेशन रो लिमिटेशन अछि इधर पानी जदि थिबो ता भितर अन्य कंपोनेंट गोटे सॉलिड थाउ स्टार्टिंग कंपाउंड गोटे सॉलिड थाउ जेमति मेटल जिंक देखतिले एंड गोटे दि चारटा गैस उडी जाऊ
आ गोटे कंपोनेंट गोटे एक्वियस सॉल्यूशन था प्रोडक्ट रो गोटे एपटू एक्वियस सेपटे गोटे एक्वियस बास होइला काम तार आयनिक इक्वेशन हे जिवो किंतु सबुडा को गैस कि सॉलिड गैस कि लिक्विड गैस हबन कार हला सीजल नहीं सीजल नहीं और देखिए अच्छा कुह आ समय नष्ट करवानी ये कौन सीजल कोठू आसी कहलानी बा सीजल तुम को स्कूल सर ओएवी ओएवी तुम तो यूरेनियम देन नथिला बोधे हम तो ना ना आमे एई वर्ष टू यूरेनियम टेकअप करू तुम सान भाई भौणी माने कमिंग ईयर टू 25 रु ओएवी ओके को देखिबा सीजल को सर रिएक्टेंट वाला नाइट्रोजन ना +5 और प्रोडक्ट वाला नाइट्रोजन ना प्लस +4 4 अच्छा सीजल तुम बालक ना बालिका सर गर्ल जेंट नो सर गर्ल यस सर ओके ओके +5 रु +4 को गला कमिला एटा हला रिडक्शन आ कोन कहलो सीजल आ के कहबो अनुभव को रुद्र को एई गोटे चोर परा एठी अच्छा अछि हां सर ऑक्सीजन टा -2 रु 0 को ऑक्सीजन टा -2 रु 0 केमति हला मु कहि दउछि मु आगुरु कहितली तमे एमती कंपाउंड रे नाइट्रोजन रो बाहर करिवो आइदर मॉलिक्यूल एज ए होल नेले हबो किबा नाइट्रेट आयन को सेपरेटली बाहर करिकरी कले भी हबो नाइट्रेट आयन रे नाइट्रोजन जेतिकी लेड नाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट सेतरे भी नाइट्रोजन सेति सो x -6 इज इक्वल टू -1 हेले x इज इक्वल टू +5 किबा जे होल मॉलिक्यूल नबो लेड रो जेहेतु वैलेंसी 2 अछि +2 +2x -3 6 2 जा -12 इज इक्वल टू 0 एते कथा कले x मध्य सेतिकी बाहरिबो so +5 थिला एठी NO2 is a neutral gas x -4 is equal to 0 so x is equal to +4 so +5 ରୁ +4 कमिला ए प्रोसेस टा हला रिडक्शन ऑक्सीजन टा सब बेले -2 अदर देन पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड OF2 O2F2 ए चारटा छाडी देले ऑक्सीजन सब बेले -2 इन कंपाउंड्स सो -2 एटा 0 एलिमेंटल स्पीसीज एटा हला ऑक्सीडेशन सो एई टाइप रो दीटा एलिमेंट गोटे कंपाउंड किंतु एलिमेंट गोटे नो सेठी जेमती गोटी एलिमेंट थिला एठी नाइट्रोजन दीटा ऑक्सीडेशन स्टेट रे थिले सत एलिमेंट गोटे किंतु एठी एलिमेंट दीटा एईटा को आउ आमे कम प्रोपोर्शनेशन की डिस्प्रोपोर्शनेशन किछि होबनी आकु कहबा ऑटो रिडॉक्स निजे सेल्फ रिडॉक्स बा ऑटो रिडॉक्स सेई थे गोटे एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाउछि आ गोटे एलिमेंट रिड्यूस हो जाउछि एगुडा सब रिडॉक्स रिएक्शन रे एते कथा पडलानी जते बेले गोटे पेरोक्साइड रो इक्वेशन तुमको कहूछि पेरोक्साइड संगे टिके खेलिबा कारण 11 क्लास वर्तमान ना आ तुमको कोन क्लास 8 9 रो ट्रीटमेंट देबी अवश्य सेते बेले तुम 11 क्लास रो जिंस जानतुलो एबे आउ टिके ऊपर जिंस जानिबो सो एठी पेरोक्साइड को चिन्ह it is here you will find it will be acting as an oxidant to oxidize sulfur from some state to some higher state. So I give you 1 minute time to find out what are the changes that happens. You know, you can guess. Sulfur गोटे लेड संगे अछि खाली PbS एटी PbSO4 ऑक्सीजन ता संगे मिसी जाईची ऑक्सीजन मिसी वाला माने गोटे प्रिमिटिव मेथड रे ऑक्सीडेशन नै सेठी चेंज हेची तार ऑक्सीडेशन नंबर तो सल्फर रे एटी बाहर करो एटी बाहर करो एंड
हाइड्रोजन पेरोक्साइड रे ऑक्सीजन रो बाहर करो एठी वाटर रे ऑक्सीजन बाहर करो मु तुमको कॉपी जोगेलेनी हाँ अनुभव रो नेटवर्क प्रॉब्लम थिला कोन आसी गलोनी केतेबेल थिला मझरे कोई बात नहीं दिस इज बीइंग recorded so you can watch it later कुह अनुभव कुह हाँ सर ऑक्सीजन सर स्टार्टिंग रे अछि -1 हबो पेरोक्साइड रे yes वाटर रे जाय कि सेटा -2 हे जिवो exactly सर आमे करथिले पेरोक्साइड रे -1 let me tell you Samita that oxidation number is always written per atom calculate कला बेलू समस्त को नहीं जाऊ आमे किंतु लेखिला बेलू per atom so oxygen होची -1 in peroxide and एटी normal oxide एटा -2 so -1 रो -2 oxidation number कमीची so इसीलिए ये रिडक्शन प्रोसेस हुआ एंड इट सल्फर रो कितना निकला पीबीएस में सर -2 -2 इट इज नॉर्मल सल्फाइड ऑक्सीजन लेड इज +2 एटा -2 लेड रो किछि चेंज हेनी किंतु एठी सल्फर केते +6 सर +6 आइदर तुम सल्फेट आयन सेपरेट करी पारो किबा लेड सल्फेट रे एज ए होल करी पारो लेड इज +2 बिकॉज़ 2 तार 2 2 कटिची तो सेति पई बेटर हबो तुम ताकू आयन करी सल्फेट आयन कले x - 8 = -2 x बारला +6 सो सल्फर रो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फेट आयन रे जेतिकी लेड सल्फेट रे सेतिकी सल्फ्यूरिक एसिड रे सेतिकी क्रोमियम सल्फेट रे सेतिकी सब सल्फेट रे सेतिकी सल्फेट आयन रे भी सेतिकी +6 so -2 ru high jump marla +6 ku so this is oxidation now the this reaction is there is no water एटी बाहरी वो लिक्विड टा किंतु आक के नो ये भी लिक्विड ये सॉलिड आकु तुम्हें यू कांट मेक इट आयोनिक इक्वेशन राइट गोटे प्रकार लिक्विड आ गोटे प्रकार लिक्विड हे जिवो गोटे ऑक्सीजन कमी जीवो सो पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखिबा को ठीक वाटर बलिया टिके विस्कोसिटी अधिका भारी चांगा सेही हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखो ए घर माउसी से घर पिउसी देखो H2O2 सेठी हाँ मु कहया को भूली गली एठी जेहेतु -1 रु -2 को गला निजे रिड्यूस हे गला एठी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रो रोल अदा कला के ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड पीबीएस रिडक्टेंट रो रोल अदा कला कारण तार ऑक्सीडेशन घटिला बट एठी हाइड्रोजन पेरोक्साइड रो रोल चेंज हे जिवो सेठी ऑक्सीडेंट रो रोल अदा करथिला एठी रिड्यूसिंग एजेंट रो रोल अदा करिवो नो नो एठी भी ऑक्सीडाइजिंग आई एम सॉरी आ गुटे देबी एटा नो एटा करो आ गुटे देबी एठी भी सही ऑक्सीडेंट रो रोल अदा करिवो यस निहार कहलो रिहान निहार मिस्टर पाट्रो लेफ्ट हैंड साइड -1 थिला एठी राइट ए तम माइक्रोफोन के प्रॉब्लम अछि हौ वर्तमान हर्षिता सर राइट रे -2 हबो हां लेफ्ट साइड राइट प्रिसाइजली करेक्ट सो एटा पेरोक्साइड -1 एटी नॉर्मल ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड रे -2 सो एटा कमिला तेनु एई प्रोसेस टा हला रिडक्शन +4 रु +6 को बढ़िला सल्फर रो एटा हला ऑक्सीडेशन सो एटा जेहेतु कमिला एटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जोटा रिड्यूस हे गला ऑक्सीडाइज एठी मते से रोल कला एटा रिड्यूसिंग एजेंट किंतु there are other reactions I'll tell you say
एटा को टिके बड़ इक्वेशन देली एडे बड़ लिखियो तुमको अनुभव ना किए पचार सेटा भल लगुच ताको एते सिंपल वे रे लिखबनी काहे काहे एते बड़ा लिखियो So potassium permanganate, sulfuric acid, hydrogen peroxide gives you potassium sulfate, manganese sulfate, oxygen गोटे चोरो oxygen धरा पड़ी गलानी आउ manganese definitely गोटे बड़ ये रे अछि तार oxygen loss हेची तेणु automatically manganese को खोजो गोटे manganese आ गोटे oxygen जना पड़ जियो ओके मैंगनीज रो केते बाहरला +7 भाबु जे माने तीन जन जाक ठीक करथिबे किछि असुविधा नै पोटासियम रो +1 मैंगनीज रो x चारिटा ऑक्सीजन को -8 इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू +7 परमैंगनेट आयन रो भी सैया सो +7 रु एटा +2 को गला कहना एटा मोनोएटॉमिक आयन ये x मेथड रे गले बोका बोकी x ए प्लस एटम की जान हां आज होल जदी सल्फेट आयन को नबो x -2 इज इक्वल टू 0 तले x इज इक्वल टू +2 भारी चलिबो किंतु काहे की मैंगनीज सल्फेट रे 2 2 कटिकिर तो हितला मैंगनीज सल्फेट जदी तुम जानि पारलोनी फार्मूलाटा से देई देइछि तुम मैंगनीज बिल जानि पारलोनी ये मैंगनीज 2 बिल जानि पारलोनी तबे x मेथड जदी करिवो एज ए होल सल्फेट आयन को नबो असली चार्ज SO4 एज ए होल सो Mn2 प्लस sorry MnX एटा -2 इज इक्वल टू 0 x इज +2 सो +7 रु +2 को खसिलानी ए प्रोसेस टा हला रिडक्शन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड रे ऑक्सीजन सबले -1 रु 0 को गलानी टी बढ़िलानी एटा होची ऑक्सीडेशन सो जेहेतु निजे ऑक्सीडाइज हे गला एठी रिड्यूसिंग एजेंट रो रोल अदा कला एवं एठी परमैंगनेट रे जेहेतु तारो मैंगनीज रो रिडक्शन घटिला तनु एटा OA एतक कला परे मु वर्तमान शेष पार्ट को आज जीवी सेटा हला बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन आ अन्य गुडा को मु जदी एंती इनफाइनाइट नंबर ऑफ यू नो 100 टा देबे एग्जांपल तमे खुशी लागुथो तुम किंतु यू हैव टू प्रैक्टिस मु प्रैक्टिस करिया पे किछि अल्प किछि क्वेश्चन दोउची एवं तार सॉल्यूशन भी दोउची तबे सेथुरु ता धीरो मते कमे के दी तीनटा करूनो किछि न कले भल लागिवनी अल्टीमेटली कौन कि यूरेनियम पिला रही दी तीन बाकी सब वी फील लाइक आइदर मते कहि कि नाही मु बंद कर दोची कारण मु स्लो डाउन करची टू द इनफाइनाइट एक्सटेंट हम यूरेनियम रो प्रोग्राम होची भलो पिला पाई गॉड गिफ्टेड फैकल्टी मानक पाई हां सी पढिनी आगु एक्सपोज नाही एक्सपोज हबो कोन मु कहिची जो माने नुवा जॉइन कलो से माने मते पर्सनली मते पचरि परिबो डाउट मु आउट समय देकी तुमको बुझेबी आई एम नॉट हेजिटेटिंग टू डू एक्स्ट्रा वर्क बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन इक्वेशन एटा जो मेथड हमें जानिबा होची ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जब जोड़ा पढुतले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड oh before that let me tell you ON method ताको शॉर्टकट रे ON method कहन let me tell you for non-redox reaction या मेटाथेसिस रिएक्शन जहार किछि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हेनी मु तुमको कहबी 11 प्रकार रो मेटाथेसिस रिएक्शन सहज तुम जानि छ ताको तुमको तार ट्रिक टा बतै देबी तुम जानि गलो एटा किछि ऑक्सीडेशन हेनी कि रिडक्शन हेनी तो से इक्वेशन उडा का हीट एंड ट्रायल मेथड रे करा जाय एटी देखि दबो फॉर एग्जांपल दर एठी अछि एल्युमिनियम सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव यू एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एठी कहार किछि चेंज हेनी
फॉर्मूलाटा को जदि ठीक न लिखिबो ताले मुंडो पिटी देले भी बैलेंसिंग हबनी जुग जुग चली जीवो एटा हे गला बैलेंसिंग इज बाय हाथ का खेल हिट एंड ट्रायल मेथड एटी एल्युमिनियम दीटा अछि एटी 2 करि पारो एटी सल्फेट तीनटा अछि एटी तीनटा सल्फेट अछि एटी सल्फेट गोटे अछि एटी 3 करि पारो अमोनियम आयन हे गला 6टा एटी 6 कर दो ऑटोमेटिकली हे गलानी 6OH एटी 6OH so it hala heat and trial method is used for non-redox reaction metathesis reaction and that too you will fail for 100 years चेष्टा कले भी हबो नहीं जदि तमे फॉर्मूला भूल लिखिथिबो now you understand what is the importance of writing correct formula this is heat and trial because this is a non-redox reaction रिडॉक्स जदि कुनी कुनी रिडॉक्स हेतिबो ताकू ताकू तमे नाकू को एमती न छुई कि नाकू कहबो एमती छुईबी ए लोक हसिबे धर जिंक प्लस HCl गिविंग यू ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस एटा रिडॉक्स रिएक्शन ताकू कहबो मु ON मेथड रे करबी लोक हसिबे एट द हाइड्रोजन दीटा अछि एटी 2 कर देले हे गला याकू मध्य तमे हिट एंड ट्रायल मेथड रे करबो किंतु जोड़ा को बड़ बड़ रिडॉक्स रिएक्शन ताकू हिट एंड ट्रायल मेथड रे कले हबो नै बहुत समय लागिवो जे नुए बेले बेले हिट एंड ट्रायल मेथड रे गोटे प्रकार रो कोएफिशिएंट दबो हेइ जिवो किन देखिलो कि से ठीक नु लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को से मैचिंग हबनी जेतिटा इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो सेतिटा इलेक्ट्रॉन गेन हो सेटा हो तार मूल मंत्र फॉर एग्जांपल ए इक्वेशन को हमें बैलेंस करबा तुमे अवश्य हीरो मार्का अछ तमे ताकू हिट एंड ट्रायल रे कर दबो किंतु कबे करबनी एइटा को छोटियाटा एटा हिट एंड ट्रायल रे कर देले भी हेइ पारे केमिति करिवो ओएन मेथड रे आग ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिन करिवो कहार चेंज हला आगुरु आमे जानचे इटी -3 रु इटी गला +2 आमे करिचे इटी ऑक्सीजन टा 0 रु -2 ता रूल कोन मु डाकी देबी रूल टा चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन रिएजेंट धर अमोनिया गोटे रिड्यूसिंग एजेंट एटी हला ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गोटे रिएजेंट रो जेतिके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हला that change will be multiplied as a coefficient with the other reagent so -3 ru +2 change केते हला yes समिता केते हला चेंज -3 रू +2 -3 रू +2 चेंज बाय मॉड नहीं जाओ नो साइन इज रिक्वायर्ड चेंज माने तर मॉड नहीं जाओ केते हला अरे कहून कौन भाई 5 हला तुम्हें जदि एपट आडू नहीं था तो +2 चेंज माने माइनस एटी -3 एटी +5 होता था मु एपट आडू नेबी कौन है मु तो मॉड नहीं जी माने तार केवल मैग्नीट्यूड क्वांटिटी टा नेबी साइन प्लस माइनस थिले ताकू प्लस कर देबी चेंज केते चेंज हला -3 थिला ए देखो एटा 0 एटी -3 एटी अछि एटी गला +2 सो व्हाट इज द टोटल चेंज हला 5 सो से जो 5 चेंज हला ताकू गुण कोउथरे ना एज कोएफिशिएंट ऑफ द अदर रिएजेंट 5 एठी गुण आर चेंज सेथरे गुण तार चेंज एथरे गुण तार मूल पर्पस होची टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड सेही प्रिंसिपल रे हमें बैलेंस कर दबा आराम रे सो वर्तमान एठी केते चेंज हला 0 थिला -2 को गला चेंज केते हला 0 थिला -2 को गला केते चेंज हला 2 बट यू हैव टू हर्षिता यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल चेंज से एजेंट रे जेतेटा एटम अछि गोटे ऑक्सीजन एटम पिछा चेंज हला 2 बट देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स सो द टोटल चेंज इज 4 सो इट इज -2 सॉरी 0 थिला गला -2 को so change hela 2 for one atom for one O atom so for 2 O atoms present in O2 the total change hela kete 2 into 2 4 so 4 is to be multiplied with the other reagent that is ammonia so etko kala pore then heat and dry तुम्हें मेन ऑक्सीडेशन सॉरी केतेटा इलेक्ट्रॉन लॉस हला
ताकू इक्वालाइज करो देख एठी नाइट्रोजन गोटाए नाइट्रोजन पाई 5टा इलेक्ट्रॉन लॉस करियो -3 रु +2 को गला बेलू सो 4टा नाइट्रोजन टोटल 5 20टा इलेक्ट्रॉन लॉस करियो सेतिकिटा इलेक्ट्रॉन गेन करिया दरकार गोटे ऑक्सीजन एटम 2टा इलेक्ट्रॉन गेन करूची 2टा ऑक्सीजन एटम इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स सो 5 मॉलिक्यूल्स विल गेन 20 इलेक्ट्रॉन्स so the number of electrons lost is 20 the number of electrons gained is 20 so सेटा को कर देले आउ किछ असुविधा नै नाइट्रोजन 4 अछि एठी 4 रे गुण एंड एठी हाइड्रोजन अछि 4 3 12 एठी 6 रे गुण देखिबो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन ता बैलेंस हो जाइथियो 5 2s are 10 this is 4 plus 6 10 it is balanced तमे मुंडो पिटिले केते समय मुंडो पिटता आइदर घोसिबो केते इक्वेशन घोसिबो नीट जेई मनो इच्छा पकेबे से माने तबे लॉजिक जानि थिले तो फटकिने बाहर कर दबो सब इक्वेशन एटा को पिला केतोडा के कॉमन इक्वेशन घोषि दियंती अरे घोषि रे केते बाटर जीवो घोषि घोषि एटा बुझिलो के माने बुझिलो हटे को आ गुड एग्जांपल देबी डोंट वरी एट ऑल यार चेंज मोठी लिखि दउछ दिके आशीष त्रिपाठी समिता टिके असुविधा लागे बुझिबा पे Yes, sir. ओके I will further simplify. Don't worry. आगो लिखी दियो एठी total change of oxidation number. इटा rule डाला total change in oxidation number in one reagent. सेटा OA or RA हो is to be multiplied with the other reagent. Total. अदर जेंट लिखु छे RA/OA लिखबी उल्टे देली OA रो चेंज RA रे गुणिबो RA रो चेंज OA रे गुणिबो मु आ गुड एग्जांपल देले तुम सुविधा हबो से धरो एमोनिया संगे क्लोरीन देले धरो हैला नाइट्रोजन प्लस HCl धरो एटा हैला आगो प्रथम काम होची तुमे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो कोटारू कोटा चेंज नाइट्रोजन गोटे चोर एठी अनकम्बाइंड स्टेट रे अछि एठी कंबाइंड स्टेट रे अछि आ क्लोरीन गोटे चोर एठी अनकम्बाइंड स्टेट रे एठी कंबाइंड स्टेट रे एटा आउरी सिंपल ता थारो आउरी सिंपल एटा केते नाइट्रोजन एठी -3 थिला रुद्र नुए आ ଆଜ୍ଞା एठी sir एठी थे 0 एटा अनकम्बाइंड स्टेट रे अछि 0 सो -3 रु 0 एटा हला ऑक्सीडेशन तो एटा रिड्यूसिंग एजेंट एठी क्लोरीन टा 0 रु -1 एटा रिड्यूस हला कमी गला तणु एटा हला प्रोसेस टा हला रिडक्शन बट क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा वर्तमान मते समिधा कुह जे अमोनिया रे नाइट्रोजन तो गोटी एटम अछि टोटल चेंज केते हला आरए रे टोटल चेंज केते Sir, 3. यस प्रिसाइजली गोटे एटम अछि तेणु 2 गुणिया दरकार नहीं सो -3 -0 चेंज पूरा गोटे माइनस चेंज माने माइनस तार आरटा माइनस माइनस दिले प्लस हे जिवो न एठी 0 अछि ना सो 3 मोड नहीं गला माने आ तार साइन टा रहिबनी माइनस दिले प्लस हे जिवो सो टोटल चेंज हला 3 गुण कोउथरे ना आरटा रे एठी 3 गुण यार चेंज हला जति कि एथरे गुण बर्तन चलो सेपरेटली बाहर करबा क्लोरीन रो केते चेंज हला समिता को देखिबा टोटल चेंज केते हला टोटल चेंज 1. हां Sir, 1. नो 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 गोटे क्लोरीन पाई 1 किंतु एठी दीटा क्लोरीन अछि सेति पई मु हाइलाइट करछि टोटल चेंज एठी एठी सिना अमोनिया रे गोटे नाइट्रोजन एटम थिला बोली किंतु एठी क्लोरीन रे दीटा क्लोरीन एटम अछि सो टोटल चेंज 1 हबनी केते हबो समिधा केते Sir, हबो ସେଇଟା କହିଦେବେ हां sir ସେଇଟା ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ कहि देबी yes sir हां हमरा मु कहली गोटे गोटे क्लोरीन पाई चेंज हला केते -1 सॉरी 0 थिला -1 को आसिला
what you said is correct. Change होची 1 ହେଲା गोटे क्लोरीन पाई किंतु एठी दीटा क्लोरीन अछि सो गोटे 1 क्लोरीन पाई जदी चेंज हला 1 सो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर केते हला Sir, केते हला 2 into 1 is equal to 2 so say 2 टाको मल्टीप्लाई करिवो 1 नुए 2 will be multiplied here ए केस रे काहे कि 3 रहला 3 into 2 गुणिले नै कि नाइट्रोजन गोटे एटम अछि जार कि चेंज हेछि हाइड्रोजन रो किछि चेंज हेइनी नाइट्रोजन हैज ओनली अंडरगॉन चेंज तेणु आमे -3 टू 0 गला 3 किंतु एटी क्लोरीन दीटा अछि गोटे क्लोरीन पिछा चेंज हेछि 1 हेले दीटा को चेंज हेछि 2 2 is to be multiplied here now you understood yes, sir. now बाएं हाथ का खेल अभी बाएं हाथ का खेल कौन हबो नाइट्रोजन दीटा अछि एटी ऑलरेडी दीटा अछि आइदर तुम हाइड्रोजन को धर कि क्लोरीन को धर गोटा को धरले आरटा हो 6टा हाइड्रोजन अच्छी बाँ पटे सो ये 6 रे गुणिदेले ऑटोमेटिकली क्लोरीन संख्या इक्वालाइज हो गला लास्ट बट वन एलिमेंट को इक्वालाइज कर देले द लास्ट एलिमेंट विल बी ऑटोमेटिकली इक्वालाइज्ड हैला एबे को माने बुझिला को यार टोटल चेंज सेतरे गुणा हबो यार टोटल चेंज ना आमर तो बर्तमान एक्जिस्टिंग जूम रे हम नॉन यूरानियम वाला मात्र अछंती अभिजीत ने सॉरी सिजल हर्षिता पीयूष सिंह समिता समिता आशीष एतिक तो 3-4 जन अछंती so please they also I'm telling you those who are were invited from non-uranium places schools I also request you to bear with me because I have to also make some justice to them I cannot have two separate program for those who are coming from uranium background that is from Odia medium and those who are coming from the English medium background जो मानको पाई uranium आजिकली तांको पाई किछि कैंप फैम करूनी because they are getting a lot of scopes from different places so I have to make a compromise तांको मध्य मु खुशी करिवा को चाहिबी एवं तमको मध्य मु चाहिबी तमे तार कांसेप्ट ता बुझ मु सेत पई अधिका इनपुट देबी रिपीट करबी जदी दरकार पड़े तो सेति पई एटा मु कहि दोची एठी काहे कि एठी हला 4 ऑक्सीजन गोटा को समिधा 0 रु -2 को हला चेंज होची 2 किंतु दीटा ऑक्सीजन अछि सो टोटल चेंज हला 4 चारटा एपटे गुणा हला बुझियला हेलो समिधा बुझियला कि नहीं Yes, sir. आउ गोटे तुमको कर दबा सेटा तमरो समस्त करि परिबो डरिबोनी बहुत इजीली हे जिवो तुमको समिधा पाई बहुत इंटरेस्टिंग होबो कारण ए जो गुणा हला एतरे 4 गुणियो को पड़िबो आगरु टिके तुमको कॉपी जोगै दउची Akash Behra is watching from outside. Okay, he says good explain master, but he's giving a very apprehensive, dubious emoji. Hi Akash. Thank you. एटा क्लाइमैक्स आजिकार क्लाइमैक्स सीन किछि नै मु जो प्रिंसिपल कहलिनी आराम रे हे जिवो रुद्र हाथ टेकलानी don't be scared by you know those who have answers instantaneously I give you time I give you time
देखो without any delay because it is a ongoing लाइव स्ट्रीमिंग होची तेणु आम डिले करवानी फॉस्फरस एटी केते अनकम्बाइंड स्टेट रे 0 एटी फॉस्फरस केते बाहरला सीजल अछ कि सीजल yes sir केते अछि एटी Sir. फॉस्फरस sir reactant वालाटा ना रिएक्टेंट रो काई पचरी मो एटा 0 लिखि सालिनी पूरा हां प्रोडक्ट sir product +5 प्रिसाइजली +5 +3 + x minus 12 is equal to 0 हेले x5 so अच्छा नाइट्रोजन एटी केते ऑब्वियसली नाइट्रोजन एटी फ्री हेची माने एटा निश्चय हेतिबो एटी नाइट्रोजन केते sir आशीष plus आशीष +5 केते आशीष sir +5 प्रिसाइजली +5 एंड एटी NO2 रे +4 सो एटा कमिछि अच्छा वर्तमान एटा देखिबा एटा जेउटु कमिछि एटा हला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एटा जेउटु बढिछि एटा रिड्यूसिंग एजेंट छाड़ो फॉस्फरस रे टोटल चेंज केते हला वर्तमान समिधा त्रिपाठी what is the total change in oxidation number in P4 reducing 5. सेही तो हला भूल आउ total change आउथरे को ट्राई कोशिश करो कोशिश करने से नामुमकिन सा काम मुमकिन हो जाता है Sir 20. यस गोटे फॉस्फरस एटम पाई जदि चेंज हला 5 एपट को देखा दरकार नहीं एथि 10टा एटम थाउ कि 20टा एटम फॉस्फरस थाउ एपटे वी आर नाउ हैंडलिंग द रिएक्टेंट्स सो गोटे फॉस्फरस रे चेंज हला जदि +5 चारिटा को 20 सो वर्तमान 20 गुणिबो एथरे 20 विल बी द कोएफिशिएंट हाउ नाइट्रोजन रो चेंज हला 1 +5 थिला +1 +4 को गला चेंज हला 1 सो 1 कोन लिखा जाए इट इज अंडरस्टूड किछि न लिखिला माने 1 अछि बस एतिकी लिखिला परे एवरीथिंग विल बी इन ए फ्लैश in no time you will find that एटी फॉस्फरस 4टा अछि एटी 4 रे मल्टीप्लाई करिवो फॉस्फरस को समान कलो देन ऑक्सीजन को लास्ट को जीवो हाइड्रोजन 20 टा अछि 4 3 12 4 3 जा 12 8 हे गलानी आउ दरकार 8 टा सो एटी 4 करिवो सो 12 + 8 20 एंड 80 20 हाइड्रोजन समान हे गला तो ऑटोमेटिकली देखिबो ऑक्सीजन समान हे जाइथिबो 23 जा 60 एंड एपटे फॉस्फोरिक एसिड रे 4 4 जा 16 +2 +4 ओ नाइट्रोजन टा हिने आई एम सो सॉरी नाइट्रोजन टा एठी 20 टा अछि नाइट्रोजन एठी 20 टा करबा को मु भूली जाईछि नाइट्रोजन एठी 20 गला माने हाइड्रोजन 20 टा नाइट्रोजन 20 टा ऑक्सीजन 60 टा तो नाइट्रोजन टा को समान करनी ना तो एठी 20 करबा को पड़ियो देन चेक करो 20 3 60 टा होची ऑक्सीजन 23 जा 60 and 4 4 जा 16 plus 22 जा 40 plus 4 so this is also 60 so it is very easy and interesting so now you realize that the most important thing is to have a command of writing formula then to find oxidation number and therefore I'm spending more time on oxidation number and then everything will be easy ar change sithre gunibo tar change ethre gunibo well there will be some problem if 80 अनुभव ना अनुभव की कहतला 80 वर्तमान धोखा खाइबो देखो मु जदी गुटे नेली एटा लास्ट आई वोंट एटा केते इजीली तमे हैंडल करि परिबो आयोनिक इक्वेशन रे किंतु मॉलिक्यूलर इक्वेशन रे कोन होबो गंडगोल करिवो किए ना ये स्पेक्टेटर तोरा गुटे रिएक्शन एमती कले आमे आयरन संगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दे आमे रिएक्शन करे डाइल्यूट सो दैट हमें लाफिंग गैस मिलला रेडिश ब्राउन गैस मिललानी लाफिंग गैस मिलला इनटू आयरन 2 नाइट्रेट एंड वाटर
एटा मॉलिक्यूलर इक्वेशन को हम बैलेंस करिया को चाहिबा हरण घण पड़िबा कारण ये कबाब में हड्डी हमको मॉडिफिकेशन करिया पड़िबो आयनिक इक्वेशन हेतले आराम रे करथांते हम जोटा हमें काली करिबा तो एठी हमें सही मेथड रे एठी 0 रु वाला +2 को नाम के वास्ते 2 गुणी दियो चेंज हला 2 सो 2 एठी गुणी दियो नाम के वास्ते ये चेंज हबो एपोटटा रहिबो ए नाइट्रोजन एठी +5 थिला एठी +1 चेंज केते हला +5 रु +1 चेंज केते हला सर 4 4 सो 4 एठी गुणा हला बस एटा ठीक रहिला एठी चारटा जेहेतु गुणा हला एठी 4 द मोमेंट यू मल्टीप्लाई 4 इन द राइट साइड ये हड्डी कबाब में हड्डी 4 दुणे 8 टा नाइट्रेट आयन अधिक आइ गला सी तो पुणी से नाइट्रिक एसिड रु आसीबो पुणी मॉडिफाई करियो पड़ियो ए जो 2 नाइट्रिक एसिड से हीरो मार्का दोउची दीटा N2 +1 मार्का जो नाइट्रोजन से दोउची दीटा नाइट्रोजन एठी दीटा N2 रे जो दीटा नाइट्रोजन से दोउची तेणु ये सिना N2 देला किंतु ये जो 8टा नाइट्रेट आयन अधिका अच्छी राइट साइड रे शुद्ध स्पेक्टाटर से तो सही नाइट्रिक एसिड दबो तेणु 2 रे 8 मिसिबो केते हबो ये 2 टा कटा जीवो 2 दोउची ये आउ 8टा नाइट्रेट आयन शुद्ध मिसिबो ता संगे केते हबो 8 + 2 केते 10 10 करियो पड़िबो सेतरु दुईटा हीरो दुईटा नाइट्रेट आयन जो दुईटा नाइट्रिक एसिड दबो से हीरो मार्का से N2O दबो आउ जो 8टा बेकारिया 8टा नाइट्रेट आयन को इक्वलाइज करियो को दबो किंतु बैलेंसिंग सॉरी आयनिक इक्वेशन करथिले ए नोबत आसी नथांता तमे खाली हीरो मार्का को जानि थांतो जीरो मार्का के नाहंती सो वर्तमान 10टा हाइड्रोजन अछि तेणु एठी कोन खबो 10 करियो खले 5 गुणियो पड़ियो 5 दुणे 10 5 2 10 तो तापरे देखिबो आमे ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बैलेंस हे सारी थिबो 10 3 30 ऑक्सीजन एठी 3 2 6 4 24 +1 +5 = 30 सो जोठी स्पेक्टेटर आयन थिबो सेठी ए मेथड रे ओएन मेथड रे ए गोटे गोटे कोएफिशिएंट को मॉडिफाई करियो पड़िबो हीरो मार्का जति के रहिला जीरो मार्का पई एक्स्ट्रा ऐड करियो पड़िबो सो विथ दिस वी अच्छा आ गोटे जिंस मु कहि दिए बिफोर आई क्लोज तुमे के बैडमिंटन के खेलुछ अनुभव ना यस सर इट्स वेरी गुड आई एप्रिशिएट जो माने खेल पई जे कहिबे ना वो हो कि जियो हो आई कैन गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प कारण पिला माने आज कली खेलु नांती एते आमे सब एनवायरनमेंट समस्ते वी आर पार्ट ऑफ द रैट रेस रे आमे समस्ते अछि एते प्रेशर दोउचे पिला माने खेलिबा को पाउ नांती तेणु एक्चुअली इट इज अनुभव फॉर हुम दी मुंड जो प्रपोज करथली 330 ना 4 एमती कोन करथली ताको कमी करी 630 कले एबे देखु जी 630 इज ए वेरी लेट टाइम स्पेशली मोर आ भितरे दिदिनी मोर रहउची गोटे प्रोग्राम बाहर रहउची जोटा के मते अटेंड करिया पड़िबो मे बी भुवनेश्वर मते कटक रो जिबा पड़िबो व्हिच आई हैव टू गो लीव बाय 7 मैक्सिमम लेटेस्ट बाय 7 तेणु फ्रॉम कमिंग दिन कहीं करवा व्हाई नॉट द रिमेनिंग डेज आमे टिके चेंज करके 530 रु 7 करवा कौन हम इज देयर एनी प्रॉब्लम नो सर जार प्रॉब्लम हो हाथ टेको तुम्हें सर टाइम केते कहले सर मो सुनी पाई 530 तुम्हें 530 रे सरीबो तमे टिके आइदर टिके 5 मिनिट आगुरु पळे आसीबो किंबा आमे आरंभ करथुवा तमे जॉइन करिवो पछरे सुनी देबो कोन हला ठीक ठीक है सर जदि सरी जाइछि तमे डायरेक्टली जॉइन करो जदि 530 रे जस्ट सरीला तमे आसीबा को टाइम टिके लागिला तमे हसी जॉइन करिवो आगुरु मु जान लियो कोन बुझिला तो सो आज जो तमे पाइबो नोटिस जो लिंक पाइबो सेटा को काली 530 जो माने वाच करूचंती फ्रॉम डिस्टेंस एंड फॉलो करूचंती से मानक मध्य मोर अनुरोध टिके टाइम टा चेंज हला इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एट 630 हमें स्टार्ट करिवा काल टू 530 एंड tomorrow I will be taking a 1 hour class because I have to go to Bhubaneswar for some party. I think Samita, are you going there? So where? Oh, जानना अच्छा हो जानी
Let me tell you, boys and girls, Samidha is my relative. She will be my granddaughter, but is not direct granddaughter. She is the indirect granddaughter. But don't be sweat that Tripathi, but is not directly related to this Tripathi. I mean, so say more Mrs. Adu, more wife Adu, say granddaughter. So that is why I am also interested for her. So call to 5:30, right? Bye-bye. Pranam sir, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.